Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 23rd of September. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to Gujarat where he inaugurated multiple projects. Then we will be talking about Piyush Goyal ji who has launched 6 initiatives and a 100 rupees commemorative coin for Make in India's 10th anniversary. Then we are talking about Huron India Wealth Report, that is your Mercedes-Benz Huron India Wealth Report. Then Ministry of Rural Development, they have signed an MOU with NIRD, NPR and 4 SRLMs to strengthen the Day NRLM initiative. All these things and many more will be discussed, so stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. Prime Minister Narendra Modi was also on a visit to Gujarat recently on 20th of September, where he has inaugurated multiple development projects worth 34,200 crore rupees. These are in areas such as your ports, energy sector, health sector, highways, heritage, industrial zone, and many more. These projects were inaugurated in areas such as your Bhavnagar, Dholera, Lothal, which are in Gujarat, right? And in Dholera, Tata is also setting up their semiconductor fabrication unit, right? So these are the projects. Say for example, so if we talk about the maritime project, he laid the foundation stone for multiple maritime sector development projects worth 7,870 crore rupees, where to boost the maritime growth, he virtually dedicated 21 MOUs worth 66,025 crore rupees under Ministry of Port, Shipping and Waterways. And this is important, virtually he inaugurated Mumbai International Cruise Terminal, that is India's largest cruise terminal worth 556 crore rupees at Indra Dock in Mumbai, Maharashtra. Take a note of this, students, this is important, right? Then during his visit, Prime Minister Narendra Modi has also attended the Samudra Se Samriddhi event, right? And this was under the theme, that is Samudra Se Samriddhi. And where was this held? This was held in Bhavnagar. This was held where? In Bhavnagar. Bhavnagar is in Gujarat. Right? Take a note of this. Then, apart from this, students, remember in Bhavnagar, he inaugurated projects worth 5,200 crore rupees. And under this, it lays the world's first compressed natural gas CNG terminal, right? That is at the Brownfield port and for the expansion of the Sir T. General Hospital in Bhavnagar. So this is important. Where is the world's first CNG terminal? That is compressed gas terminal inaugurated, or the foundation stone for which was laid, it was in Bhavnagar. Important, so take a note of it, right? So these are some important projects that you need to remember or that he inaugurated during his visit to Gujarat. If we talk about Gujarat, who is the Chief Minister of Gujarat? Bhupendra Patel. Who is the Governor of Gujarat? Acharya Devrat. What is the capital? Gandhinagar. And there is your one more thing that is just mentioned, Dholera. In Dholera, you are seeing a semiconductor fabrication unit of Tata. Moving on, next is Union Minister Piyush Goyal ji has launched 6 initiatives and a 100 rupees commemorative coin for Make in India 10th anniversary. So first question, which is this anniversary we observed in the 2025 of Make in India? It was the 10th anniversary of it, right? And Piyush Goyal ji has launched 6 initiatives as well as a 100 rupees commemorative coin to mark the 10th anniversary of Make in India initiative, right? And if we talk about the 6 initiative, first is your assessment of logistic cost in India. This report was launched, right? That will estimate the logistic cost by transport mode, product type and firm size, including freight cost per ton kilometer. This report was presented by NCAER along with DPIIT. Then second thing you need to remember
is about Industrial Park Rating System 3.0 was developed. It was developed by DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, along with Asian Development Bank, that will further strengthen the India's industrial ecosystem and enhance the competitiveness of industrial infrastructure. Then Logistic Data Bank 2.0. Third thing, Logistic Data Bank 2.0, developed by NICDC, Logistics Data Services Limited. It is an enhanced platform for high seas exports, container tracking, and multimodal shipment visibility that will support the MSMEs and exporters while strengthening India's digital, transparent, and globally competitive logistics ecosystem. Right? Then, fourth thing you need to remember is about leads. What is leads? Logistic is across different states for 2025. This is an annual index and survey. Annual index and survey, right? That will include logistic performance across states and union territories. So hence lead survey, right? Then fifth thing is your HSN codes. HSN codes is your harmonized system of nomenclature codes, right? Here Piyush Goyal ji has released a guidebook here on mapping of these HSN codes that are prepared by whom? This guidebook, DPIIT, right? This guidebook has allocated 12,167 HSN codes across 31 ministries and department, and these products, they have these HNS code. And the sixth thing that you need to remember is your state and city logistic plans, right? Here the government of India initiated these plans under the SMILE scheme, right, in collaboration with Asian Development Bank, beginning with 8 cities and across 8 states. So these are the 6 initiatives that you need to remember here, students, that we just discussed. Correct? Then here you can see, and the important thing, 100 rupees commemorative coin to mark the 10th anniversary of Make in India initiative. Right? And here you can see the initiatives that were launched, and Make in India was launched in 2014 by Ministry of Commerce and Industry. Then further here you can see that this coin, this is a 100 rupees commemorative coin that weighs 35 grams. It measures 44 millimeter in diameter. It is made of quaternary alloy, that is our 4 alloys, that is 50% silver, 40% copper, 5% nickel, and 5% zinc. Right? Next. So we have seen all these things. Moving on. Next is Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report was released, in which Maharashtra state has secured the top position, right? And they have topped India's wealth map with 1.78 lakh households. Correct? So if we talk about this Hurun India, they partnered with Mercedes-Benz, right? We all know this is a very big brand, right, which provides Mercedes company. So they have partnered together and they have launched the Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report and Luxury Consumer Survey for 2025, in which Maharashtra has been consolidated their position as India's richest state, right? Which is the richest state of India? It is Maharashtra, and it has 1.78 lakh millionaire households. 1.78 lakh millionaire households. That is an increase of 194% since 2021. Then on second position comes Delhi. Delhi is at 79,800. Then third is Tamil Nadu with 72,600 millionaires. Right, here you can see Delhi, then Tamil Nadu, then Karnataka, then Gujarat. Right, take a note of this. So also there was a report released that stated that the top 10 states in India, it constitutes for about 79% of the millionaire families, and they are the reason that they are increasing the gross state domestic product and the business formalization across various technology, finance, and industrial sector. Right? Also, if we talk about among Indian cities, we all know Mumbai, it is known as the financial capital of India, and it has also emerged as the millionaire capital with 1.42 lakh millionaires households. Correct? Then again followed by New Delhi on second position, Bangalore on third positions. Correct? Take a note of this. Also, question can be asked, which is the most preferred bank by the millionaires here? So it is HDFC Bank that is preferred as the most, or it has emerged as the most preferred Indian private bank, whereas Citibank
right? It was voted as the top international private bank. Top international private bank. So remember these two data also. These are also quite important. So here you can see the list, students. Moving on, Ministry of Rural Development, they have signed an MOU with NIRD and PR and 4 SRLMs to strengthen the day NRLM. So this Ministry of Rural Development, they signed an MOU with National Institute of Rural Development and Panchayati Raj and 4 state rural livelihood missions of Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand and Telangana, and it is to strengthen Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. What is the main aim of this MOU that has been signed? This MOU will be focusing on capacity building, leadership training, leadership training, livelihood opportunities will be provided, right? Digitization will be done, correct? And this digitization will be done through Lok OS, right? Also, here you will be seeing that the community institution will be strengthened. Here, digital innovations will be promoted at the grassroots level and social inclusion will be talked about here. And the state rural livelihood missions of 4 states will be specifically targeted here, that is Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand and Telangana. Correct. If we talk about Day NRLM, that is Day Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, it was launched by Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development. It was launched in 2011 and it was launched as Ajivika, but it was later renamed in 2015 to Day NRLM, and it is to organize rural poor women self-help groups, improve credit access and enhance the livelihood opportunities in the rural areas. Next is, students, Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. They have launched a GST Grievance National Consumer Helpline, right? And it is to address the consumer complaints that are ahead of the next generation GST reforms of 2025 that will be coming into effect from 22nd of September 2025. What is the toll-free number here? For this, the GST Grievance National Consumer Helpline, the toll-free number is 1915, right? And this can be accessed through WhatsApp, SMS, email, Umang app, and many more. And the sectors that will be covered under this National Grievance Consumer Helpline is automobile, banking, consumer durables, e-commerce, FMCG, and many more. Right, students? Moving on, NTPC PSU, they have signed an MOU with SEC to promote the power sector transformation and global energy expansion. I repeat, NTPC, that is your National Thermal Power Corporation Limited. It is an Indian PSU and they have signed a memorandum of understanding with Saudi Electricity Company to enhance cooperation and exchange technical expertise in the electricity sector. So take a note of this. What is this MOU signed for? To promote power sector modernization, and an establishment of joint venture will be done here. Next is IIT Kanpur and VNU. VNU is your Vietnam National University. They have signed an MOU to strengthen academic and research collaboration, right? And if we see this MOU, this will promote collaborative research, academic exchange and scientific development. And here the focus area will be, that is AI for healthcare, AI for education, for infrastructure, for monitoring, for material science and drone technologies, right? So AI will be incorporated everywhere in today's world, and with this we will be seeing that the researchers will be benefiting a lot. Days of work can now just be completed in just few hours with the help of artificial intelligence, and this MOU has been signed for 4,200. Then next is SDHI, that is your Swan Defence and Heavy Industries Limited. They have signed an MOU with Sagarmala Finance Corporation Limited under the Ministry of Port Shipping and Waterways and Gujarat Maritime Board with an aim to explore and support shipbuilding projects in India. The focus will be on 4 key areas such as your technical cooperation, commercial evaluation, financing, project execution, ecosystem development and many more. Right here you will be seeing an MOU that is worth 4,250 crore rupees has been signed. Why this amount will be used and where this amount will be used? This will be used for the shipyard modernization, right? For the shipyard infrastructure modernization. Correct? Take a note of this. Moving on. Next is international affairs, students.
inaugural bilateral maritime exercise between India and Greece was held at the Mediterranean Sea. Take a note of this, right? So from India it is Indian Navy, and from Greece it is your Hellenic Navy that held this exercise. Was held from 13th to 18th of September. It was held in Mediterranean Sea, and it is a milestone that has been achieved in the defense cooperation between India and Greece. This was the first edition, or we can say the inaugural edition of this exercise, that is your bilateral maritime exercise. This exercise was held in two phases, that is your harbor phase and sea phase. And the next question can be asked is that from Indian Navy, which Indian naval ships took part here? So from in here, Indian naval ship Trikand from India took part in this exercise. Next is BBJN. What is this BBNJ? BBNJ is your biological diversity of areas beyond national jurisdiction agreement. Correct. So BBNJ treaty, they have achieved 60 ratifications threshold, and it is set to take effect from January 2026. With this move, this BBNJ agreement will come into force from when? From 17th of January. This is the question that will be asked. That is from 17th of Jan 2026. This BBNJ treaty, it is also known as the High Seas Treaty, right? And this is the first legally binding international framework that is aimed at protecting marine biodiversity in the high seas. So BBNJ, it is to protect, as you can see here, the fishes in the basically it has been an earth that is symbolizing the fishes. So it is to protect the marine ecosystem, right? It is to protect the marine biodiversity in high seas, right? That compass of almost 2/3 of the world. Correct. This treaty, it is focusing on environmental impact assessment, right? It is focusing on ensuring equitable sharing of the benefits rising from the marine genetic resources, correct, and also in scientific cooperation and establishing marine protected areas protocols in the international water. Right now, why we are discussing this? Because this treaty has achieved 60 ratifications, that has been signed by 145 countries, right, and ratified by 61 countries, that will be coming into effect from 17th of January 2026. Take a note of this, students, important, right? Next is awards and recognition. Legendary Malayalam actor and Padma awardee Mohanlal to be conferred with Dadasaheb Phalke Award for 2023. As you can see him in the picture, very famous Malayalam actor and Padma Shri awardee Manoharlal Nair will be conferred with Dadasaheb Phalke Award for the year 2023. And this Dadasaheb Phalke Award, it is the India's highest cinema honor, right? So which is India's highest cinema honor? It is your Dadasaheb Phalke Award, and he will be the 55th recipient of this Dadasaheb Phalke Award, right? Take a note of this, important, right? If we talk about this Dadasaheb Phalke Award, it was formed in 1969 by the government of India to commemorate Dadasaheb Phalke, right? And Dadasaheb Phalke, also known as the father of Indian cinema. Who was the 54th recipient? And we discussed this also, students. Mithun Chakrabarti was the and the actor turned politician and Padma Bhushan awardee Mithun Chakrabarti received the Dadasaheb Phalke Award, and he was the 54th recipient. And now, who is the 55th recipient here for Dadasaheb Phalke Award? Legendary Malayalam actor and Padma awardee not Manoharlal, it is Mohanlal ji, right? Take a note of this, Mohanlal Vishwanath Nair. Next is Andhra Pradesh bagged the best state award for silk development. I repeat, Andhra Pradesh, they received the best state award under the Mera Resham Mera Abhiman program, that is a flagship initiative of the Central Silk Board, that is an autonomous body which works under the Ministry of Textiles, right? So which state has bagged the best state award for silk development? It is Andhra Pradesh, and it was under Mera Resham Mera Abhiyan program, that is a flagship initiative of the Central Silk Board, right? This was during the 76th edition of the Central Silk Board Foundation Day celebration, where it was held. It was in Bangalore, Karnataka. Moving on, next is appointment and resignation, students. As you can see here in the picture, Amita Chaudhary became the first woman of Indian origin to chair UNEP FIPSI board. What is UNEP? United Nations Environment Program, headquarter of which is in Nairobi, Kenya, right? And she became the first woman of Indian origin to chair this
UNEP, Principles for Sustainable Insurance Board. Correct? Take a note of this. Here, with this appointment, she became the first woman of origin to lead the Global Sustainable Insurance Board. Correct? Take a note of this. And here you can see, let me show you that here Amita Chaudhary was appointed by United Nations Group of Head Sustainability at American International Insurance Company as one of Asia's largest life insurance company as the chair of the board of UNEP, Principles for Sustainable Insurance. Direct question, students, will be asked, so take a note of this. Next, this organized, that is UNEP FI. UNEP's headquarters is in Nairobi, Kenya. But if asked about UNEP FI, where is this headquarter? Their headquarter is in Switzerland, right? In Geneva, Switzerland. Then next is sports, students. Inline speed skating world championship was held and our country India has won 3 gold, 2 bronze here, right? And this is your inline skating. This is the 73rd edition of the inline speed skating world championship that was organized by World Skate. It was held where? It was held in China from 13th to 21st of September. And here, who secured the top position? It is Colombia, who dominated the medal tally with 44 medals, whereas our India stood at the 5th position with 5 medals, that are 3 golds and 2 bronze medals. Moving on, students, next is World Athletics Championship 2025 to be held in Tokyo, Japan. So take a note of this. Direct question will be asked. This will be held from 13th to 21st of September. And this event marked the 3rd time that Japan has hosted this championship since 1990, or we can say earlier it was in 1991, then it was in 2007, and now in 2025. This is the 20th edition of the World Athletics Championship. Where it was held? It was held in Japan. If we talk about the medal tally, it is USA that secured the first position in the medal tally with 26 medals, right? Next, one more thing, the next edition of this, that is the 21st edition, will be held where? It will be hosted in Beijing, China in 2027. Next, we are talking about F1 Azerbaijan Grand Prix. It was won by whom? As you can see him in the picture, he is Max Verstappen, and he has won the Azerbaijan Grand Prix. This is the 8th edition of the F1 Azerbaijan Grand Prix, right? Who secured 2nd position here? First here is, who won the 1st position? Max Verstappen was on 1st. Then, apart from this, George Russell on 2nd, Carlos Sainz on the 3rd. Max Verstappen, he drives for Red Bull, and George Russell drives for Mercedes, and Carlos Sainz, he also drives for Mercedes. Next is important day, students. International Red Panda Day observed on 20th of September, and this day is to raise awareness about the red panda, that is the first panda species and the only endangered panda species. Correct? This was observed on 20th of September. Not every year we observe this on 20th of September. It is just in 2025. Generally, it is observed on the 3rd Saturday of September month. 3rd Saturday of the September month, that was observed on 20th of September. We observed this day. First time it was observed in 2010. Next is your International Day of Peace, observed on 21st of September, and this day is observed to celebrate and promote the principles of peace within among all the nations and people. And this year it was the 26th anniversary of this day that was observed. And here you can see a picture here, that is dove carrying an olive branch, and this is the olive branch, and this is the dove bird, right? So this is the basically symbol here that we observed. And there is a theme also, students, that you need to all remember, that is act now for a peaceful world. What is the theme? Act now for a peaceful world. And what we discussed was a symbol, that is dove carrying an olive branch. Next is World Alzheimer's Day. It is observed on 21st of September. Alzheimer is basically a disease in which a person starts to forget things, right? It is a type of a dementia only, and this day is observed basically to raise awareness about the health of the individual and the family, the problems that they have to go through, the problems that individuals have to go through, right? And here you can see purple ribbon. This is the symbol here for the Alzheimer, and this month, that is the September month, is also the month for the Alzheimer, right? That is your World Alzheimer month. Then there is a theme here, students, that is ask about dementia, ask about Alzheimer's.
right? This is the theme here that you need to remember. And globally, over 55 million people living with dementia worldwide. Then next is state news. Bihar's Tourism Department and IWAI, that is your Inland Waterways Authority of India, they have signed an MOU to start water metro services in Patna. Very important, students. Now the focus is on cruise tourism, right? Now the focus is on that how can we use the river bodies not just for tourism but also for connectivity, right? For logistic purpose or for travel, right? So Bihar Tourism Department and IWAI, they have signed an MOU to start water metro services in Patna, and this will be from Digha Ghat to Kangan Ghat in Patna, that is the capital city of Bihar. The project cost here will be 908 crore rupees, and this location is important, that is from Digha Ghat to Kangan Ghat in Patna. This you have to remember, correct? And the vessel that will be used here is MV Nishadraj, NISHADRAJ, right? That will be used here. This is an hybrid electric vessel. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved an additional outlay of how much amount for the central sector scheme, that is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, during the 15th Finance Commission cycle for 2021 to 2026. It is 1920 crore rupees. Take a note of this, right? And we are talking about the 15th Finance Commission cycle here, right? That is from 21-22 to 25-26 here. Also take a note of this. Here focus will be on various projects that will be enhancing the food security, right, as well as the food value chain. Cold storages will be focused here. Next, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved 4 multi-tracking projects under the Ministry of Railways at an estimated cost of 11,169 crore rupees. Which of the following state is not among the 6 covered under these projects? Which is it? It is Uttar Pradesh, that is UP. Take a note of this. Next is mention the name of the nationwide 100-day campaign launched by the Investor Education and Protection Fund Authority in July for the shareholders to provide knowledge about claiming the unclaimed dividends. It is Saksham Niveshak, right? To claim the unclaimed dividends here, this Saksham Niveshak, this is a 100-day nationwide campaign that was launched from 28th of July till 6th of November 2025. Next, where was India's first indigenously built 1 megawatt green hydrogen power plant inaugurated by Union Minister for Port, Shipping and Waterways Sarbandana Sonowal on 31st of July. So, where was this inaugurated? It was in Gujarat, right? And the project was executed with engineering support from L&T Limited, that is based in Chennai, Tamil Nadu. And this is the first of its kind green hydrogen facility installed at an Indian port and forms a part of a 10 megawatt project under National Green Hydrogen Mission. Next, mention the organization that launched the AI-powered initiative titled AI-powered context-specific Agromet Advisory Service for Climate Resilient Agriculture at Scale. This was during an Inception workshop held in July at Hyderabad. So, mention that organization. It is International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Next, name the mission launched by the Ministry of Tribal Affairs in August through regional process labs in Dehradun and Bhubaneswar to build a network of tribal grassroots functionaries across India. So, name that mission. It is Adi Karam Yogi Abhiyan. This initiative aims to create a vibrant network of 20 lakh tribal grassroots functionaries and village level change leaders covering 1 lakh tribal dominated villages. Next, India's first ever grassland bird census released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in July was conducted in which national park? It was in the Kaziranga National Park, right? And this census was from 18th of March till 25th of May, right? And various technologies was used here to monitor the grassland bird species. Next, identify the port that became the first in India to produce green hydrogen and achieve over 1 megawatt of rooftop solar power generation as announced during the Green Ports and Shipping Chartering Sustainable Maritime Future Conference in August 2025. Which is it? It is your VO Chidambranar port, right? Where is this port located? It is located in Tamil Nadu and it became the first Indian port to successfully produce green hydrogen and achieve 1 megawatt of rooftop solar power generation. Moving on. Next,
Next is mark the correct statement regarding Prime Minister Narendra Modi's visit to Varanasi, UP. If we look at the options here, option A is right and C is right, B is wrong. B is saying Prime Minister Narendra Modi inaugurated 37 rural drinking water schemes under Jal Jeevan Mission along with purification projects at Ramkund, Mandakini and Shankuldhara Kunds. So is it correct here? So no, this option B is wrong here, and here the right option will be, or the focus will be, it is not 37 rural drinking water schemes but 47 rural drinking water schemes that were inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, and they were under Jal Jeevan Mission. Now option B is right. Next, where was Maitri One initiative, that is a 750-acre theme-based forest project jointly launched by the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav ji, and Union Minister of Housing and Urban Affairs in August. So, where was this Maitri One initiative? It was in Gurugram, Haryana. The focus was on conserving the Aravali Hill range, right? And this Maitri One, this means Mother's Forest. It will be basically focusing on the ecological conservation and sustainable development and will contribute to the biodiversity in the Aravali areas. Also, One Mahotsav, that is a tree planting festival, that is a flagship initiative of the Government of India, was also celebrated here from 1st to 7th of July. Moving on. In August, Government of India, they registered a multi-state Sahakari Taxi Cooperative Limited, a consortium of 8 cooperative organizations to launch a taxi service under the brand name Bharat. Question is, which one of the following cooperatives is not a part of this consortium? So among the following here, National Cooperative Housing Federation of India is not a part of this consortium. Rest all are the part of this consortium. Next, identify the organization that in collaboration with the Ministry of Ayush has recently released a comprehensive list of Ayurvedic food items under the Ayurveda Ahara category in August. So, identify the organization. It is your Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI. Next is in July, Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis inaugurated India's first AI-powered dash in Vadhanma village in Nagpur, Maharashtra under Mission Bal Bharari. So which is it? It is your Anganwadi Center. The center was launched under Mission Bal Bharari to introduce advanced digital tools that will strengthen the early childhood education in the rural areas. Next, under which mission did the Ministry of Mines recognize 7 institutes including 4 Indian Institutes of Technologies and 3 research and development labs as the center of excellence? So under which mission it was? It was under the National Critical Minerals Mission. Next, which state government has launched the Annadata Sukhi Bhava Pradhan Mantri Kisan Samman, that is PM Kisan scheme? Then this is the full form here. You need to remember the full form. If you haven't noted, take a note of it. Right? If we talk about which state government launched this Kisan scheme to provide annual financial assistance to the farmers. So it is Andhra Pradesh. So which state government? Andhra Pradesh state government. And eligible farmers here will be receiving 7,000 rupees in the first tranche. Next, which of the following program is not among the 4 development projects launched in the first phase of the India-UN Global Capacity Building Initiative in August to achieve sustainable development goals for 9 partner countries? It is renewable energy development and grid management. Next, which Indian state became the first to empanel sign language experts under Juvenile Justice Act of 2015 as announced on 4th of August? So, which is that state and it became the first state to do so? It is Punjab. Take a note of this, important. Next is name the organization that organized the first ever BIMSTEC Traditional Music Festival inaugurated by Union Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar. So, which is that organization that organized this first ever BIMSTEC Traditional Music Festival? It was organized by the Indian Council for Cultural Relation. And this event was held under the theme Saptasur, 7 Nations, 1 Melody. Because in BIMSTEC there are 7 major nations. Next is in August, during the inaugural TN Rising Investors Conclave held in Tamil Nadu, the Tamil Nadu government received the single largest commitment from the Dash, that is from the Sakshi Group, which plans to establish an ammunition and propellant unit in Tuticorin with an investment of 5,000 crore rupees. Next, name the first common central secretariat building inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in August to streamline administrative processes under Central Vista Redevelopment Project. It is Kartavya Bhavan 03. The project is a part of Central Vista Redevelopment Project, which encompasses the construction of the new Parliament building and the Vice President's enclave. Next,
Name the AI-powered learning application that was launched by the Indian Institute of Technology, Palakkad in Kerala, as India's first AI-based educational app for aspirants of JEE, NEET, and CAT exams in August. So, name that AI-powered learning application. It is Tutos. Next is in August, India conducted the first ever bilateral maritime cooperative activity, naval exercise, with whom? It was with Philippines in the South China Sea to strengthen the maritime interoperability and improve the operational coordination. So take a note of this, students, right? And in this, from Indian side, INS Mysore, INS Shakti, and INS Kiltan, they took part here, right? Next, mark the correct statement regarding the base year revision proposals announced by the Ministry of Statistics and Program Implementation on 6th of August. If we look at the options here, option A is right and C is right, B is wrong. It is saying that the base year for the index of industrial production is proposed to be revised to 23-24. Is it correct? So it has been not 23-24 but 22-23. Now option B is also right. Next, which state launched the heat resilient Mudadi project to mitigate rising temperatures due to extreme heat waves? It is, which state has launched this? Launched by Kerala, and this is Kerala's first comprehensive heat action plan by the local self-government body, the aim of which is to regulate the local temperatures and reduce the impact of climate change in those areas. Next, students, is our homework section. First question, tell me who has been recently appointed as the brand ambassador for Eco Insurance. Second, who has been appointed as the head coach of Indian men's football team. Third question, tell me recently who became the first women Director General of Railway Protection Force in 143 history of Railway Protection Force. Fourth question, who has been appointed as the CEO of Manappuram Finance. Fifth question, recently who has been appointed as the Vice President of ICMAI and the President of ICMAI. So these are your 5 homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 23 सितंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी गुजरात के विजिट पे थे, राइट, 20 सितंबर को। देन हम बात करेंगे पीयूष गोयल जी के द्वारा 6 इनिशिएटिव्स एंड 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया टू मार्क मेक इन इंडिया की 10th एनिवर्सरी। देन मर्सिडीज ने ह्यूरन के साथ मिलकर अभी इंडिया वेल्थ रिपोर्ट रिलीज करी, उसको डिस्कस करेंगे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा MOU साइन किए गए विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को प्रमोट किया जा सके, इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी गुजरात के विजिट पे थे ऑन 20th of September, जहाँ पे इन्होंने मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए वर्थ 34,200 करोड़ की लागत के। ये प्रोजेक्ट्स आएंगे जहाँ पे आप ये प्रोजेक्ट देखेंगे पोर्ट सेक्टर्स में रिलेटेड है, देन एनर्जी से रिलेटेड रहेंगे, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड रहेंगे, हाईवेज, हेरिटेज, इंडस्ट्रियल जोन से रिलेटेड रहेंगे। धोलेरा में, भावनगर में, लोथल में ये लॉन्च किए गए। धोलेरा की याद रखेंगे, धोलेरा भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टाटा अपना एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। इसी के अलावा अगर हम देखें जैसे मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स देखें, तो सबसे पहले इन्होंने 7,780 करोड़ रुपीज़ के ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे इन्होंने 21 MOUs डेडिकेट किए वर्थ दिस अमाउंट। एंड इनके द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल। 556 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया एट इंदिरा डॉक इन मुंबई, महाराष्ट्र। टेक अ नोट ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया समुद्र से समृद्धि इवेंट को अंडर द थीम समुद्र से
समृद्धि, राइट। ये कहाँ पर था? ये भावनगर गुजरात में हमें देखने को मिला था, करेक्ट। फिर इसी के अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बात करें तो भावनगर में, करेक्ट, इन्होंने इनॉग्रेट किए प्रोजेक्ट्स वर्थ 5200 करोड़ रुपीस, जहां पे वर्ल्ड का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल, दैट इज ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल को ब्राउनफील्ड पोर्ट पे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सर टी जनरल हॉस्पिटल इन भावनगर। ये भी मार्क करके चलेंगे, राइट। चलिए, फिर इसी के अलावा याद रखेंगे एक और चीज स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन किसको रिकॉग्नाइज किया गया? ये मुझे आप बताओ। बेस्ट टूरिज्म विलेज ये कौन सी रिकॉग्नाइज की गई है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसी से रिलेटेड है, आपको बताना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने भी 6 इनिशिएटिव्स लॉन्च करे एंड एक 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया फॉर मेक इन इंडिया की 10th एनिवर्सरी, राइट। 2024 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, इसको डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले 6 इनिशिएटिव्स देखते हैं। पहला इनिशिएटिव है असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। ये रिपोर्ट बेसिकली बताती है कि क्या हमारी एस्टिमेटेड लॉजिस्टिक कॉस्ट रहती है ट्रांसपोर्ट मोड से, प्रोडक्ट टाइप से, फर्म साइज से, फ्रेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर के हिसाब से। इसको NCAER DPIIT के द्वारा मिलकर रिपोर्ट को रिलीज किया गया। फिर दूसरा इनिशिएटिव है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0। ये बेसिकली ये रेटिंग सिस्टम रहेगा जो कि DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को एनहेंस करने का काम करेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है लॉजिस्टिक डाटा बैंक 2.0। इसको NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक एनहेंस प्लेटफॉर्म है हाई सीज एक्सपोर्ट कंटेनर्स ट्रैकिंग के लिए, जिससे जो MSMEs हैं एंड एक्सपोर्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथन एक मिलता हुआ देखेगा। डिजिटली ट्रांसपेरेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक इकोसिस्टम यहाँ पर हमें इसकी बदौलत देखने को मिलेगा। तो ये था थर्ड इनिशिएटिव। फोर्थ आ जाता है फिर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, SN कोड्स यहाँ पे लॉन्च किए गए। इसके लिए पीयूष गोयल जी के द्वारा एक गाइड बुक लॉन्च की गई है जो कि HSN कोड्स को मैप करने का मदद करती है। इसको DPIIT के द्वारा रिलीज किया गया एंड ये गाइड बुक अलोकेट करती है 12,167 HSN कोड्स को अक्रॉस 31 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। देन फिफ्थ इनिशिएटिव आ जाता है स्टेट एंड सिटी लॉजिस्टिक प्लान। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया दिस प्लान अंडर स्माइल इनिशिएटिव, जो इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू बिगिनिंग with 8 cities across 8 states। फिर ये चीज़ें याद रखेंगे स्टूडेंट्स। एंड मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, राइट। तो ये कुछ आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक और याद रखेंगे, बीच में ही आ जाना चाहिए था, ये था लीड्स 2025, जो कि है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये बेसिकली एक इंडेक्स है एंड सर्वे है जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है। चलिए, तो ये छठा हो गया। तो ये 6 इनिशिएटिव यहाँ पे याद रखेंगे आपने और एक 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन। ये जो कॉइन है ये 35 ग्राम का रहेगा, 44 मिलीमीटर इसका डायमीटर रहेगा। क्वाटरनरी अलॉय मतलब 4 अलॉयज हैं, 50 सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल एंड 5% जिंक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर मर्सिडीज बेंज एंड ह्यूरन, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे इंडिया वेल्थ रिपोर्ट को रिलीज किया गया, जहाँ पे टॉप करने वाली स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। यहाँ पे 1.78 लाख हाउसहोल्ड, मिलियनियर हाउसहोल्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में, एंड इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। महाराष्ट्र के बाद कौन सी सिटी आ जाती है या फिर स्टेट आते हैं? महाराष्ट्र के बाद है दिल्ली विद 79,800 मिलियनियर्स, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन कर्नाटका, देन गुजरात, राइट। यहीं पे अगर हम सिटी वाइज देखें तो सिटी वाइज भी मुंबई यहाँ पे टॉप करती है। अगर सिटी वाइज मिलेनियर लिस्ट देखें तो मुंबई यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। तो मुंबई टॉप करती है। देन न्यू दिल्ली ऑन सेकेंड पोजीशन इन सिटी वाइज लिस्ट ऑल्सो, राइट। तो आप यहाँ पे स्टेट की रैंक देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने MOU साइन किया है NIRD एंड PR के साथ, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के साथ, अलॉन्ग विद 4 स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस के साथ। कौन कौन से स्टेट के? आंध्र प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के एंड तेलंगाना के, ताकि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को और स्ट्रेंथन किया जा सके। ये बेसिकली ये मिशन क्या था? सबसे पहले नेशनल दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था
ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस हैं राइट रूरल एरियाज में उनको एम्पावर किया जा सके, उनको हेल्प किया जा सके टू ग्रो। इसको इनिशियली 2011 में लॉन्च किया गया था, इसका नाम था आजीविका पहले राइट। फिर 2015 में इसका रीनेमिंग करके दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया राइट। एंड जो रूरल पुअर वीमेन हाउस होल्ड ग्रुप्स होते हैं राइट, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लाने के लिए, क्रेडिट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए एंड बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए उन एरियाज में उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था करेक्ट। एंड यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इससे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा अक्रॉस दीज 4 एरियाज स्पेसिफिकली राइट। एंड यहाँ पे लोक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से राइट, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करेगा एंड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता हुआ दिखेगा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड देयर फेडरेशंस। इसकी मदद से यहाँ पे बेटर टेक्निकल अप्रोच राइट, रिसोर्स पूल क्रिएशन, लीडरशिप ट्रेनिंग करेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इनके द्वारा जीएसटी ग्रीवियंस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है। मतलब ये एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है जहाँ पे अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल बैंकिंग एंड उमंग ऐप, एनसीएच पोर्टल, इन सब के थ्रू यहाँ पे आपको हेल्प देखने को मिलेगा। 1919 ये यहाँ पे टोल फ्री नंबर रहेगा इसके लिए। एंड सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ई कॉमर्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इन सब से यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। एंड 17 इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एनटीपीसी जो कि एक पीएसयू है। इन्होंने एमओयू साइन किया एसईसी के साथ। एसईसी है सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ, ताकि पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल एनर्जी एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान दिया जा सके। इससे क्या होगा, पावर सेक्टर मॉडर्नाइजेशन होगा। यहाँ पे जॉइंट वेंचर साइन होगा जिससे एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करने को मिलेगा हमें। एंड दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर एनर्जी को, सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का काम करेगा, स्पेसिफिकली इन द नॉन ऑयल सेक्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आईआईटी कानपुर एंड वीएनयू जो कि है वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी। इन्होंने एमओयू साइन किया टू स्ट्रेंथन एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन राइट। तो एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए एआई की मदद से स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं सालों का वर्क कुछ दिनों में हो जाता है। मतलब 1 साल का वर्क आप ये मान लो कुछ दिनों में, मतलब कुछ घंटों में भी हो जाता है एआई की मदद से राइट। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो भी रिसेंटली एआई की मदद से कुछ 1000 डिजीज़ को हम होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर सकेंगे राइट। ये गेम चेंजर आया अभी रिसेंटली। ये एलएलएम ट्रेन किया गया है वेरियस पेशेंट्स के डाटा पे, जिससे जो ये मॉडल रहेगा ये इजीली, ये एआई 1000 से भी ज़्यादा डिजीज़ को इजीली होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएगा, सालों अहेड प्रेडिक्ट कर पाएगा किसी भी इंडिविजुअल में राइट। तो ऐसे एआई से हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, मटीरियल साइंस सेक्टर में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो उससे हमारी जो लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई दिखेगी। एंड इसीलिए ये एमओयू यहाँ साइन होता हुआ देखा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं एसडीएचआई जो कि है स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने एमओयू साइन किया सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एंड जीएमपी जो कि है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ, जिसका एम रहेगा टू एक्सप्लोर एंड सपोर्ट शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 4250 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जहां पे इंडिया में बेटर एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा, बेटर इकोसिस्टम बनता हुआ हमें दिखेगा। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स क्या, जो आपके शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा करेक्ट। एंड यहाँ पे जहाँ हम देखेंगे यार्ड कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, वेसल टाइप्स यहाँ पे आएंगे, नए आपके वेसल्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा अक्रॉस दीज पोर्ट्स। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। इनॉग्रल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई इंडिया एंड ग्रीस के बीच में। इनॉग्रल है तो ये पहला एडिशन रहेगा जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक कॉपरेशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2 फेज में हुई थी, आपका हार्बर फेज में एंड सी फेज में। लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली, मेडिटेरियन सी में देखने को मिली, जहाँ पे इंडिया की तरफ से अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने पार्टिसिपेट किया तो आईएनएस त्रिकांड का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला इंडिया की तरफ से राइट। टेक अ नोट ऑफ इट। मूविंग ऑन, देन बीबीएनजी ट्रीटी इन्होंने अचीव किया 60 रेटिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स को, सेट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2026। 17 जनवरी 2026 से ये यहाँ पे लागू होता हुआ हमें दिखेगा बीबीएनजे ट्रीटी। ये बीबीएनजे ट्रीटी बेसिकली क्या है, बीबीएनजे ट्रीटी है आपकी हाई सीज ट्रीटी इसको हम बोलते हैं। एंड ये एक लीडिंग या फिर हम बोलेंगे ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है
राइट। इनका एम रहता है कि कैसे हम जो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड के ओशंस है, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, हम उसको कंजर्व कर सकें, राइट, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। एंड इसी के लिए ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके अभी 60 रेटिफिकेशन इनके द्वारा अचीव किए गए हैं, जो 17 जनवरी 2026 से लागू होते हुए दिखेंगे। ये हाई सीज ट्रीटी जिसको हम बोलते हैं, ये BBNJ ट्रीटी, इसका मेन एम रहता है कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को हम कंजर्व कर सकें, ऐसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हम बना सकें इंटरनेशनल वाटर में, राइट, जहां पर हम देखेंगे कि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को इक्विटेबल रिसोर्स शेयरिंग हो सके, कॉपरेशन हम सभी कंट्री के साथ मिलकर काम कर सकें, एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट के ऊपर हम यहां पर काम कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर। लेजेंडरी मलयालम एक्टर एंड पद्मा अवार्डी मोहनलाल जी, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2023 के लिए। एंड ये 55th रेसिपिएंट बन गए हैं इस अवार्ड के। 54th रेसिपिएंट कौन थे? मिथुन दा, राइट, वो 54th रेसिपिएंट बने थे इस अवार्ड के, करेक्ट। एंड अभी रिसेंटली कौन बने हैं 55th रेसिपिएंट? वो है मोहनलाल विश्वनाथन नायर। ये काफी फेमस मलयालम एक्टर हैं एंड पद्मश्री अवार्ड, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, करेक्ट। एंड अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के जी की, तो ये कौन है? ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको बोला जाता है, करेक्ट। एंड 54th रेसिपिएंट कौन बने थे? मिथुन चक्रवर्ती, करेक्ट, जो कि एक्टर थे, ही टर्न पॉलिटिशियन, एंड उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, इन्होंने बैक किया बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट, रेशम के डेवलपमेंट के लिए, राइट, जो अवार्ड सम्मानित किया गया, या फिर कौन सी स्टेट है जो जिनको बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया रेशम डेवलपमेंट के लिए, सिल्क डेवलपमेंट के लिए, वो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। 76 सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था, जिसके दौरान इनको सम्मानित किया गया। बेंगलुरु कर्नाटका में ये इवेंट हमें देखने को मिला था। फिर आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है अमिता चौधरी, ये वो पहली वीमेन बन गई ऑफ इंडियन ओरिजिन जो चेयर करेंगी UNEP FIPSI बोर्ड को, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव प्रिंसिपल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड को। ये पहली इंडियन वीमेन बन गई, या फिर बन गई है फर्स्ट वीमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको यहाँ पे अपॉइंट की गई एज द चेयर हेयर। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के ऊपर। इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिली, जहां पे इंडिया ने अभी 3 गोल्ड मेडल एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता है। मेडल टैली दिखा देता हूँ। कोलंबिया ने यहाँ पे टॉप किया 44 मेडल्स के साथ, देन इटली, देन चिली, देन इक्वाडोर, एंड इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता है विद 5 मेडल्स। ये 73rd एडिशन था इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का। वर्ल्ड स्केट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहाँ पे? चाइना में। 13 से 21 सितंबर तक ये इवेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये टोक्यो जापान में हुई, ये भी मार्क करेंगे। एंड दिस इज द 3rd टाइम कि टोक्यो जापान ने इस चैंपियनशिप को होस्ट करा। ये आपका 20वां एडिशन है, 20th एडिशन है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 13 से 21 सितंबर तक हमें देखने को मिला था। 3rd टाइम जापान ने 1991 में पहले जापान ने होस्ट किया, 2007 में, और अब 2025 में इनके द्वारा होस्ट किया गया, राइट। ये 20वां एडिशन था। टॉपर कौन रहे मेडल टैली में? पहली पोजीशन पे आ जाते हैं USA विद 26 मेडल्स। नेक्स्ट इवेंट जो होगा, जो कि है 21वां एडिशन, बीजिंग चाइना में होगा 2027 में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा यहाँ पे विक्ट्री हुई, ये इन्होंने जीत लिया है। तो मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। फिर इसके बाद मैक्स वर्स्टैपेन के बाद आ जाते हैं जॉर्ज रसल, देन कार्लोस सेंज। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, जॉर्ज रसल मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, एंड कार्लोस सेंज भी मर्सिडीज के लिए ही ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। 20 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 3rd सैटरडे ऑफ द सितंबर मंथ, 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ। इस बार 2025 में ये 20 सितंबर को हुआ। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि रेड पांडा जो स्पीशीज है उसको प्रिजर्व करने के लिए एंड उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, क्योंकि एक इकलौती पांडा ऐसी स्पीशीज है जो कि एंडेंजर्ड है, ठीक है, मार्क करेंगे। एंड इसको पहली बार 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पीस को प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डव है, एंड डव के मुंह में यहाँ पे जो ये स्टिक आ जाती है, ये आपकी क्या है? ऑलिव ब्रांच है। तो डव कैरिंग एन ऑलिव ब्रांच यहाँ पे सिंबल रहेगा। एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, राइट, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये थीम रहेगी। 21 सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार इसको 1982 में ऑब्जर्व किया गया था।
फिर आ जाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, 21 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, एंड सितंबर मंथ को ही हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के तौर पे भी। ये डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? बेसिकली अल्जाइमर एक डिजीज होती है जिसको एक इज अ फॉर्म ऑफ अ डिमेंशिया, जहाँ पे इंडिविजुअल्स भूलने लगते हैं चीज़ों को, राइट। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उन लोगों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए दैट आर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल रिबन, ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे इस डे को, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स, ये यहाँ पे थीम रहेगी। एंड सितंबर मंथ को वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के तौर पे भी ऑब्जर्व किया जाता है। फिर स्टेट न्यूज आ जाते हैं स्टूडेंट्स। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एमओयू साइन किया ताकि वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्ट की जा सके पटना में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, दीघा घाट से लेके कंगन घाट तक ये सर्विस रहेगी इन पटना, जो कि कैपिटल सिटी है बिहार में। फिर यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा कि किस वेसल की मदद से यहाँ पे ये सर्विस स्टार्ट होगी, तो वो है एमवी निशा द्रज। ये वो वेसल यूज किया जाएगा फॉर दिस मेट्रो सर्विस, वाटर मेट्रो सर्विस पटना में, जो कि दीघा घाट से कंगन घाट तक होगी। इंपॉर्टेंट है, 908 करोड़ की लागत से यहाँ पे ये मेट्रो सर्विसेज इन वाटर स्टार्ट करने का काम करेगा। इससे ट्रैवल जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा, इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी एंड लॉजिस्टिक भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। On the occasion of the 70th anniversary of the State Bank of India on 1st of July, in which two cities did SBI inaugurate अपना specialized global trade finance center? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कोलकाता में एंड हैदराबाद में इन्होंने इसको लॉन्च किया। यहीं पे एसबीआई ने, याद रखेंगे, एक अपना अनाउंस किया है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, जो कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने का काम करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें हेल्प करेगा, एंड नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है 2070 का, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने भी पार्टनर किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जून के महीने में टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक्स नेटवर्क। वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म, जो सपोर्ट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सेगमेंट्स को इंडिया में, एमएसएमईज को। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सब्सक्राइब टू 1301.25 करोड़ रुपीज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो इशू किए गए हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा जुलाई के महीने में, ताकि सपोर्ट किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग को इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है ये आरबीआई की, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच डिड द IFC कमिट टू इंटीग्रेट ट्रस्ट? इंटीग्रेट ट्रस्ट ये आपका एक इन्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। एंड IFC ने कितना कमिट किया इंटीग्रेट ट्रस्ट में इन जुलाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट 180 मेगावाट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट में, जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात में रहेगा। तो 460 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, फंड करने की बात की गई बाय IFC इन दिस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एंड ये 460 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे थ्रू लॉन्ग टर्म लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर RBI's फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो कि टैक्सेबल है फॉर द पीरियड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025 विद इंटरेस्ट पेबल ऑन 1 जनवरी 2025। तो 8.05% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट UAE बैंक जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम IFSCA टू सेट अप अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट विद इन गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो कौन सा वो बैंक है, पहला बैंक बना UAE का जिन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप किया है, वो है माशरेक बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर एशिया डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोग्राम, जो एम करता है टू अनलॉक लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हाई इम्पैक्ट एंड एमर्जिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया। तो कितना अमाउंट अप्रूव किया गया था? $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी टू ऑपरेट एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर अंडर सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन ऑफ 1992। तो आइडेंटिफाई द कंपनी, वो है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने लॉन्च किया 2 नॉन पार नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल प्लान्स, नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम को इन जुलाई
टू केटर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कौन सा है? वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस बैंक ने साइन किया एक अग्रीमेंट CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ ताकि एनेबल किया जा सके रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शंस एट जिप सिटी गांधीनगर गुजरात। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पर? वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज को एंड रिसोर्स को, जो कि एक रीजनल पीयर टू पीयर P2P लर्निंग नेटवर्क है टू ड्राइव UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने जुलाई के महीने में अनवेल किया एक नया इंडेक्स जिसका नाम है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स, जो कि ड्राइव कर देता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम BSE 1000 इंडेक्स। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया विद इंडिगो एयरलाइंस के साथ टू रीलॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय इंडिगो ब्लू चिप्स। वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कैम्स, इन्होंने कैम्स पे पेमेंट गेटवे लॉन्च किया, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया। कैम्स पे इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद किसके साथ? माइला पे के साथ, ताकि सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने कमिट किया कितना अमाउंट टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रोथ मिल सके, EWS एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को इंडिया में फंक्शनिंग यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो $100 मिलियन का यहाँ पे कमिट किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया BSE पावर ETF एंड BSE पावर ETF फंड ऑफ फंड को, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा पावर सेक्टर के ऊपर। तो ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा ये ETF एंड फंड ऑफ फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मॉनेटरी पेनल्टी जो इम्पोज की गई RBI के द्वारा ऑन HDFC बैंक विद नॉन कंपाइलेंस फ्रॉम द फेमा 1999 रेगुलेशंस, जो थी FDI से रिलेटेड। तो कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई HDFC पे? 4.88 लाख रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया जुलाई के महीने में, जो एड करता है सेटलमेंट वायलेशंस को ऑफ वाइंडिंग अप प्रोविजंस बाय माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड्स। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। DRDO, इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस फोटोनिक रडार। ये आपका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए, जहाँ पे अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्टेल्थ डिटेक्शन एंड इम्यूनिटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से। नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग किस मटेरियल से रिसर्चर्स ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, जो कि US से की हैं, राइट, इन्होंने बिल्ड किया एक कंप्यूटर स्क्रैच से, जो कि पॉसिबिलिटी शो करता है टू रिप्लेस द मटेरियल दैट फ्यूल द बल्क ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बाय मार्किंग अ स्मॉलर एंड फास्टर डिवाइस। तो सिलिकॉन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया इनके द्वारा, राइट, जिससे बताया गया कि जो कंप्यूटर्स हैं वो लेस बल्कि होते हैं, राइट, स्मॉलर होते हैं एंड फास्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ जिसको कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी एट यंटर शिपयार्ड इन कैलिंग्रैड, रशिया। ये 8th है इन द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट 113.6 ऑफ तलवार क्लास एंड सेकंड वेसल इन द फॉलो ऑन तुशील क्लास ऑफ शिप्स। तो कौन है INS? ये है INS तमल, इंडियन नेवल शिप तमल। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने रिसीव किया स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड 12652 उदयगिरिकोर फ्रॉम मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको डिलीवर किया गया अंडर व्हाट? अंडर प्रोजेक्ट 17A। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी दैट मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज ग्रेड सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स। तो कंपनी का नाम बताओ, वो है माईफाई सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द हाइपरसोनिक व्हीकल हुज टेस्ट फ्लाइट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय चाइना इन जुलाई, जो कि मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल प्रोपल्शन। तो नाम बताओ उस हाइपरसोनिक व्हीकल का, वो है फेंटियन 2। ये भी चाइना के द्वारा डेवलप की गई है एंड हाइपरसोनिक फ्लाइट को सस्टेन करने के लिए ये काफ़ी की एनेबलर रहने वाली है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच इंडिया के
पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट 30 यूनिट्स का ऑफ काइमेरा 200 एंटी ड्रोन सिस्टम्स वर्थ 22.21 करोड़ रुपीस। तो सरबेयर से इन्होंने ये ऑर्डर रिसीव किया है इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स का। नेक्स्ट, डीआरडीओ लेबोरेटरी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फील्ड ट्रायल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैको एंड कॉम्बैक्ट ट्रांस हॉराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम को। कहाँ पे टेस्ट किया गया इसको टेस्ट किया गया, लोकेशन का नाम बताओ कहाँ पर टेस्ट किया गया इसको, उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ विच इज सेट टू बिकम इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी टू ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग अ लोकली बिल्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू यूजर्स अक्रॉस द कंट्री। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का, वो है अनंता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरस्टेलर कॉमेट जो कि डिस्कवर किया गया बाय नासा दैट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, एंड ये थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट किया गया अपने सोलर नेबरहुड में। ये है 3I एटलस, 3I मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो स्टूडेंट्स इसको एलियन बताया जा रहा है, राइट। ये एक एलियन शिप है जो कि अर्थ पर आने वाली है, अर्थ पर अटैक कर देगी, बट आई रिमाइंड यू ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज एन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि बिल्ड किया जा सके इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट, जिसका एम रहेगा कि नेशनल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना एंड जो क्वांटम थ्रेट्स हैं उनसे हम बच सकें। तो किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया है, वो है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा यूजर ट्रायल किसका, तो ये इरेसर का यूजर ट्रायल था, एंड यूजर ट्रायल ऑफ इरेजर जो कि एक इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम है। इंडियन नेवल शिप कावारती से इसको टेस्ट किया गया था 23 जून से 7 जुलाई के बीच। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप जिसको डिलीवर किया गया बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन जुलाई टू द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो उस नेम बताओ उस इंडियन नेवल शिप का, वो है INS निस्तार। ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ पर अभी इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा 2 शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट को ऑफ द गगनयान सीरीज मॉड्यूल प्रपल्शन सिस्टम का, तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इन दोनों को टेस्ट किया गया। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसीव किया फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इनस्पेस टू ऑफर कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया, तो वो है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग एमिंग फॉर नासाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन जो कि मार्स पे होगा एंड ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट पीपल टू सेट फुट ऑन मार्स, एंड ये जब वहाँ पर जाएंगी मार्स पे तो बोला गया है कि ये वापस अर्थ पर नहीं आएंगी। तो ये क्या कौन है, ये है एलिसा कार्सन। नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स इन्होंने जॉइंटली कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को, एस्ट्रा इसका नाम रहेगा, जिसको इक्विप किया गया विद इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। तो कहाँ पर, वेयर डिड DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स इन्होंने कंडक्ट किया इन ओडिशा ITR ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर ओडिशा, यह टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, नेम द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया था इन पार्टनर विद इजरायली स्पेस एजेंसी, एंड इन्होंने लॉन्च किया इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो DROR-1 ये सैटेलाइट का नाम रहेगा, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फैल्कन 9 की रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने डेवलप किया वर्ल्ड का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस जिसका नेम रहेगा साइबॉर्ग B, जिसका वेट रहेगा 74 मिलीग्राम्स, एंड ये काफ़ी इजीली मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है बी की। ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया, काफ़ी ही डेंजरस ये हो सकता है अगर इसको रॉन्ग तरीके से यूज़ किया जाए, राइट, साइबॉर्ग B। नेक्स्ट, DRDO इन्होंने हैंड ओवर किए 6 इंडिजीनियस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को टू द इंडियन आर्मी इन जोधपुर राजस्थान। आइडेंटिफाई वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज नॉट लिस्ट ऑफ दिस 6 प्रोडक्ट्स। तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल यहाँ पे इसमें पार्ट नहीं है, बाकी सभी पार्ट है। नेक्स्ट, इंडिया ने रिसीव किया सेकेंड जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजन को फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। सिंपल क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ये किस कंपनी की है,
किस कंट्री की कंपनी है, तो ये यूएसए की है। नेक्स्ट स्पेसएक्स यूएसए, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया 24 अमेजॉन क्यूपर सैटेलाइट्स को। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इनको केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इनको लॉन्च किया गया। एंड ये भी क्या कर रही है, ये भी सैटेलाइट से की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, तो अर्थ के चारों तरफ ये कॉन्स्टलेशन बना रही है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ 3 मिसाइल्स कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो तीनों ऑप्शन ही यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आते हैं मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजय को, जो फाइनल है ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बिल्ड फॉर इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम पूछा गया आपसे, तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है गार्डेड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंडिजीनियस रिकम्बेंट chimeric multi-stage malaria vaccine for which Indian Council of Medical Research invited expressions of interest for transfer of technology for their commercial production in July 2025. So identify the first indigenous recombined chimeric multi-stage malaria vaccine. तो वो कौन सी रहेगी, वो है Felcivax. Next, students, is our homework section. First question, tell me who has been recently appointed as the brand ambassador for Eco Insurance. Second, who has been appointed as the head coach of Indian men's football team. Third question, tell me recently who became the first women Director General of Railway Protection Force in 143 history of Railway Protection Force. Fourth question, who has been appointed as the CEO of Manappuram Finance. Fifth question, recently who has been appointed as the Vice President of ICMAI and the President of ICMAI. So these are your 5 homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.